Thanks all for joining. Today's topic for the webinar is actually Path to Crorepati. नाम जैजी सा रखा है, but the objective आज हम क्या करने की कोशिश करेंगे to understand investments में या अपनी लाइफ में wealthy बनने के लिए हमारे को क्या basic concepts समझने पड़ेंगे. The medium of the webinar would be a combination of English and Hindi. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Baney and FA, where we are a one-stop shop for all finance needs for people. आज हमने अपना पहला वेबिनार रखा है एंड ऑब्जेक्टिव रखा है इस वेबिनार में कि हम यंग जनरेशन के साथ एक उनके माध्यम से वी कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ टू कंसिस्टेंटली वर्क अपॉन एन इन्वेस्टमेंट अप्रोच विच कैन मेक देम वेल्थ इन द फ्यूचर. अ फ्यू हाइकिंग टिप्स. एज यू हैव नोटिस्ड, वी हैव केप्ट द चैट ऑन. सो प्लीज आप अपने जिस भी डिवाइस से लॉग इन कर रहे हैं थ्रू मोबाइल, थ्रू अ टैबलेट और लैपटॉप, please use this responsibly because we will use this as a medium आप लोगों के साथ chat करने के लिए throughout the webinar. In the meantime, you also please spot on your device, आपको एक Q&A का भी icon दिखेगा. जो भी questions हैं आपके related to this investment webinar और जो भी आपके concepts हैं जो आप चाहेंगे कि हम आखिरी में cover करें, हम आखिरी में काफी time रखेंगे to deal with questions. So you can populate your questions right away and we will take them one after another. Just in case if it is not working because of any technical glitch, you can also put it on the comments chat section and we will try to pick them as much as we can. Okay? So how we have structured this webinar? A quick आपको introduction देता हूँ. We have tried to explain the concepts of finance and investment through very interesting stories. पहली story होगी through Akbar and Birbal, which would be narrated by my personal finance professional Anubi Goyal. Here we will use the age-old folktales from Akbar Birbal's time to help enforce the principles of investing. The next one would be extreme new age Tina Mina story, which will be narrated by my another finance professional, Miss Shell. And finally, I'll try to tie it back into a little bit of concepts of investing, of compounding. In the end, we will take Q&A, right? So before we move ahead, it would be very good and great for me to see who all have joined. So could you go on the chat for me and quickly type just two things, location and age. So example, if you are from Delhi and you are 20 years age, just type Delhi 20. Come on the chat, guys. Let's see where our attendees are coming from. Okay, Vishal says Mumbai, 58. Yeah, okay. Haryana, Mumbai, Karnataka, Agra. Good. People from Jaipur. Ananya from Agra. Suhas from Mumbai. Unnati from Pune. Wow. Keep Avni from Pune. So good. We are seeing Ahmedabad, Pranjal from Ahmedabad. Welcome. Super. So good. So we have people of all age brackets. I'm seeing as young as 13, and we have got as experienced people as till age 58. So we'll have a very interesting webinar then today to see how we can actually cater to all of you. So on that note, I would like to welcome Anubi. Hello everyone. So welcome. I'm Anubi Goyal. Welcome to the webinar. So as Puneet just mentioned, I'd be taking you through a very Purana story, Akbar or Birbal ka. I'm sure every one of you would have heard stories of Akbar and Birbal. तो हम एक ऐसी ही story discuss करेंगे अभी. Am I audible? Yeah. So Akbar and Birbal, once they were playing a game of chess. And to no one's surprise, of course, Birbal ही जीता उस game of chess को. Birbal was one of the most smart person in Akbar's courtroom, right? And इतने अच्छे से, इतना प्यारे तरीके से बीरबल ने उस गेम को खेला that Akbar was mesmerized by his performance. He was really singing praises of Birbal. अकबर इतना खुश हुआ, उसने बीरबल को बोला, जो मांगना है वो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा. You thou wish and I will make it happen. So now Birbal was taken aback. बीरबल ने बोला, मैं क्या मांगू?
So, but he was also a very clever, wise person. उसने मांगे grains of rice. अकबर was shocked कि मैं मुगल एम्परर हूँ, तुम मुझसे grains of rice मांग रहे हो. You could have asked me jewels, you could have asked me palaces. तुम मुझसे grains of rice मांग रहे हो. ऐसा है smartest person मेरे कोर्ट का. But बीरबल was like, मेरे को grains of rice सफाइस करेंगे. बीरबल ने बोला, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो बीरबल सेड कि मुझे एक चेस बोर्ड जितने ग्रेन्स ऑफ राइस देना. फर्स्ट स्क्वायर पे 1 grain ऑफ राइस, सेकंड स्क्वायर पे डबल कर देना एंड 2 grains ऑफ राइस. On the next square, we will again double it, 4 grains of rice. On the next square, again doubling the 4, 8 grains of rice. So on and so forth. ऐसे आप मुझे पूरे 64 squares जितने grains of rice देना. अकबर वाज लाइक, ओके अब मैं क्या ही बोलूं, तुम्हें ग्रेन्स ऑफ राइस चाहिए तो ग्रेन्स ऑफ राइस. अकबर अग्री टू इट. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि आपको लगता है अकबर बीरबल की ये रिक्वेस्ट पूरी कर पाएगा? क्या अकबर बीरबल को 64 स्क्वायर्स ऑफ अ चेस बोर्ड जितने राइस दे पाएगा? प्लीज, आई एम लॉन्चिंग अ पोल हियर गाइस. आपके Q&A सेक्शन में पोल आएगा. Would Akbar be able to grant Birbal's wish of grains of rice on a chessboard? Yes, no, maybe. Come on, everyone, please answer. Yeah, अगर looks like, आपको, yeah, it's on the chat. so I think so. We are getting the responses. There are Right. people who are saying, and 86.5% are saying no. 14% are saying maybe. 1% is saying yes. Please keep replying. Okay, no problem. Let's close the Good. poll then. Okay. So looks like Anubi, people are saying 81% of people are saying nahi kar No. payega. And I think so we let's have a see. smart audience. Yeah, we So, have. Let's. yes, so I think we move on to the next slide. देखते हैं स्क्वायर चेस बोर्ड पे क्या हुआ. फर्स्ट रो से स्टार्ट किया, 1 grain ऑफ राइस से स्टार्ट किया. नेक्स्ट पे 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128. ओनली 128 grains ऑफ राइस. सेकेंड रो पे हम मूव किए, डबलिंग ऑफ 128 grains of rice to 256 grains of rice, 512. And by the end of second row, we were at 32,000 grains of rice. To give you all some perspective, 1 kg ऑफ राइस में 50,000 ग्रेन्स होती हैं अप्रोक्सीमेटली. सो अभी हम सेकेंड स्क्वायर के एंड तक, सेकेंड रो के एंड तक 1 kg ऑफ राइस तक भी नहीं पहुंच पाए हैं. मूविंग ऑन टू द थर्ड रो. थर्ड रो स्टार्टेड एट 65,000. 1 किलो तक पहुंच गए हम थर्ड रो के स्टार्टिंग पे. वाओ. Towards the end of the third row, we are at 83 lakhs grains of rice, which is equivalent to approximately 166 kilo of rice. Not a big deal for Akbar, probably. Moving on to the fourth row. It started with some 1.6 crore grains of rice and ended with 214 crore grains of rice, round about 42,000 kgs of rice. Okay, Akbar was starting to get a little worried here. Moving on to the next row. The next row started with an enormous number and ended with an even bigger number at 1 crore kgs of rice. Akbar was feeling jitters here. क्या मैं दे पाऊंगा? ये तो नंबर बढ़ता ही जा रहा है. And there are still 3 more rows to go. आगे गए हम. Sixth row, seventh row, and the eighth row. The number is so huge. अगर आप लास्ट वाला नंबर देखें 18446, मतलब मैं तो एटलीस्ट इसको स्पेल नहीं कर पाऊंगी कि व्हाट नंबर इज दिस. दिस इज सच अ ह्यूज नंबर. टू ब्रिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, एंड एज एवरी वन ऑफ यू गेस्ड करेक्टली, बीरबल का रिक्वायरमेंट एट द लास्ट स्क्वायर, बीरबल का जो रिक्वायरमेंट था, इट वाज 1,44,151 crore kgs of rice. A very huge number. And this was only at the last square. आप सोचिए, अभी तो बाकी सबको प्लस करना है हमें.
वो तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है. It is only at the last square. And just to tell you, पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन of rice, the world's production of rice is at about 77,646 crore kgs of rice. So I mean, even at the last square की requirement भी अकबर बीरबल की सफाइस नहीं कर पाएगा. Forget about, adding all of them and then giving it to Birbal. So this is what happened between Akbar and Birbal. और इसके पीछे एक बहुत मैजिक वर्क कर रहा है. देयर इज वन मैजिक फिगर दैट इज वर्किंग हियर. क्या आपको पता है क्या मैजिक वर्क कर रहा है यहाँ पर? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला है. आप मुझे बता सकते हो? प्लीज टाइप इन योर चैट बॉक्सेस, व्हाट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड? प्लीज यूज योर चैट बॉक्सेस टू आंसर. व्हाट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड विच जस्ट जो यहाँ पे काम किया? Right, we've got someone called SSG who is saying compounding. Okay, good. Correct. Unnati is also saying compounding. Anubi, looks like we have got a brilliant attendee list, huh? That's correct. And Compound interest. Kian also, he's a pretty young chap, and compound interest. Correct. Good to hear, Kian. Very correct. So yes, the eighth wonder of the world is compounding, guys. Compounding की वजह से वो एक grain of rice जो हमने start किया था on this chessboard, one grain of rice, it ended with such a huge number. Someone I think said 18 quintinal. Yeah, so that is the number. Compounding just worked here. Now to understand it further, I would invite Shell to please take the presentation further. Thank you so much, Anubi, for your lovely story. From your story, we understand that how compounding can do magic. A small grain of rice has grown exponentially to a number which we cannot spell even. So we have seen that how in the ancient time, Akbar Birbal ke time pe compounding helped them. Now we will understand like क्या compounding आज के time पे भी हमें help कर सकती है. So we will understand this with the story of two friends, Tina and Mina. So Tina and Mina, they have just completed their college and graduation complete किया है उन्होंने and they have just started their earning. अभी अभी उनकी first अपनी job लगी है and with a salary of 25,000. They both are of the same age group, 25 years के हैं दोनों. So जब हमारी first जॉब लगती है तो उस टाइम पे हमारे कुछ गोल्स होते हैं कि मुझे अपने लिए घर लेना है, एक इन फ्यूचर मैं कार लूंगी, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है या फिर मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है. सो टीना एंड मीना का भी गोल था दैट दे वांटेड टू बी अ करोड़पति इन फ्यूचर. Now, so let's understand that whether they were able to achieve their goal or not. So Tina was someone who was very diligent and smart. She always used to budget and track her expenses. Whereas Meena was someone with the thoughts ki let's live in the moment and आज जी लेते हैं जिंदगी, कल की कल देखेंगे, जो है आज कर लेते हैं. So Tina used to track her expenses. वो बजट करती थी कि मुझे कितना सेव करना है फर्स्ट एंड उसके बाद कहाँ मुझे कितना स्पेंड करना है. शी यूज्ड टू मॉनिटर हर प्राइसेस वेयर शी इज स्पेंडिंग. हर चीज वो ध्यान में रख के अपने सारे खर्चे करती थी, प्रॉपर प्लानिंग करती थी. मीना वेरस मीना वो बस उसका जैसा मन करता था कि अभी मुझे लुई विटॉन का नया कलेक्शन आ गया है तो हाँ मुझे वो लेना है, आईफोन नया लेटेस्ट आ गया मुझे वो लेना है. समटाइम्स तो क्या हो जाता था कि वो इतने ज्यादा अपनी सैलरी जो उसकी होती थी सब स्पेंड कर देती थी कि उसे अपने फ्रेंड्स से भी उधार लेना पड़ जाता था क्योंकि शी नेवर यूज टू ट्रैक हर एक्सपेंसेस. वो कभी बजट नहीं करती थी कि मेरे एक्सपेंसेस क्या है, मेरी नीड्स क्या है. So we can say Tina was someone with the mentality of save first and then spend what is remaining. Whereas Meena was someone with the mentality spend first and then save what is remaining. Now you guys tell me that who do you resonate more with, Tina or Meena? Please type your answers in the chat box. Yeah, we have launched a poll. We have launched a poll here. Let's see Yeah. the answers.
So how many of you feels like you are a Tina who saves first and then spend? And how many of you feels like that I'm like Mina, spend first and then save? Okay, so 33% are saying that they are like Tina, and 50% are saying that they are like Meena. मीना की ऑडियंस ज्यादा है हमारे पास. Pranit is saying Tina. Thank you, Pranit, for your response. Kian is also saying Tina. Thank you, Kian. And Liam is saying also Tina. Thank you guys for your responses. But looks So like now, 50-50 है Shell. Now हाँ, looks like right. the people are diverting towards Tina. पहले मीना की तरफ 50-50 हो गया था, अब फिर से 50-50 हो गया है. So looks like Okay. people are divided between उन्हें टीना चूज करना चाहिए या मीना की तरफ सोचना चाहिए. So good to see that kind of thought process. So now, as we discussed that इनका goal था that we wanted to be a crorepati in the future. Now let's see whether they have achieved their goal in the future or not. Next slide, please, Puneet. Yeah. So as I said, that Tina was with the mentality of save first and then spend. So at the age of 25 only, उसने एक छोट अमाउंट से स्टार्ट किया, 5,000 के अमाउंट से शी स्टार्टेड सेविंग एंड इन्वेस्टिंग. एंड 25 इयर्स तक, 30 इयर्स तक उसने इन्वेस्ट किया 5,000 का अमाउंट टिल हर एज ऑफ 55. The total amount she invested was 18 lakhs and the expected rate of return was 12%. नाउ मीना भी चाहती तो थी, उसका भी सेम गोल था कि मुझे भी करोड़पति बनना है, वो भी चाहती थी, बट वो सेव नहीं कर पा रही थी क्योंकि शी नेवर ट्रैक्ड हर एक्सपेंसेस. उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे कितने खर्च करने हैं, कितने सेव करने हैं. सो वो अर्ली स्टेज पे ये चीज नहीं कर पाई. वो बस सोचती थी हाँ करूंगी करूंगी करूंगी, और ये सोचते सोचते उसने एट द एज ऑफ 40 शी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. सो उसने सोचा यार मैं लेट से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं एक बिगर अमाउंट से स्टार्ट करती हूँ, शायद मेरा गोल अचीव हो जाए. सो शी स्टार्टेड विद अ नंबर ऑफ 10,000. उसने 10,000 से स्टार्ट किया सेव करना एंड इन्वेस्ट किया. एंड उसने 55 की एज तक 10,000 वो हर मंथली इन्वेस्ट करती गई. 15 इयर्स तक उसने भी इन्वेस्ट किया 55 की एज तक. शी ऑल्सो इन्वेस्टेड 18 lakhs अमाउंट, जो कि टीना ने भी 18 लाख किया था. एंड दोनों में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वॉज 12%. So now let's see Tina or Meena whether they will be able to achieve their goal of becoming a crorepati or not. What do you think कि Tina के investments की value क्या हो गई होगी? Please type your answers in the chat boxes. कि टीना के इन्वेस्टमेंट्स कितने हो गए होंगे. 18 लाख इन्वेस्टमेंट 12% के रेट के साथ 30 इयर्स तक उसने इन्वेस्ट किया 5,000 का अमाउंट. प्लीज टाइप योर आंसर्स हियर कि कितनी अमाउंट हो गई होगी टीना के इन्वेस्टमेंट की. Kian is saying Tina will get more because time in the market beats timing in the market, and Tina has stayed in for years in the market. Thank you, Kian, for your response. You have a very, I think you know the magic here. But Kian, what do you think? कितना value होगा? This was also How much highlighted money in will the Tina make? Guys, come on, give your questions one. again. SSG is saying 1.8 crore. Thank you, SSG. Jay is saying 45 lakhs. Okay. Pranit is saying 1.9 crores. Okay. Thank you, Pranit, for your response. Unnati is saying, I expect Tina would be 1 crore plus. Okay, let's see how Tina's investments will grow. Thank you for your responses. Now we will see that how much Tina's investment have grown. So the market value of Tina's investment was 1 crore and 54 lakhs. Oh my God. Have you guys imagined that 18 lakhs का figure 1 करोड़ के अबव चला जाएगा वो 5,000 के अमाउंट से जो हम इन्वेस्ट करते गए थोड़े से पीरियड में, एंड इट वुड हैव ग्रोन टू 1.5 करोड़. सच अ बिग नंबर. नाउ लेट्स सी मीना के केस में क्या हुआ. मीना ने तो बिगर नंबर से स्टार्ट किया था एंड उसने भी 18 लाख इन्वेस्ट किए, सेम रेट ऑफ रिटर्न. नाउ लेट मी नो कि मीना के इन्वेस्टमेंट्स कितना ग्रो किए थे. प्लीज टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. चल कम से कम 1 करोड़ तो हो जाना चाहिए. मतलब हाँ, उसने बिगर नंबर से स्टार्ट पता किया है. नहीं बिगर लेट्स नंबर सी. भी है और लेट्स सी.
Pranit is saying 64 lakhs. Thank you, Pranit, for I your am so response. amazed that our audience is giving us such an accurate 64 lakhs. Right. Okay. So, people, come on your chat. What do you think would be the number? गाइस गेस एन आंसर कितना हो सकता है मीना ने तो एक बिगर अमाउंट से स्टार्ट किया है ऑल्दो दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया है बट रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है उन्नति इज सेइंग 50 to 60 lakhs okay thank you unnati ss is saying 3.5 crores oh my god bigger number Pratiksha is saying 1.3 crores. Thank you, Pratiksha, for your response. SSC is saying 50 lakhs. Okay. Thank you, guys, for your responses. Shuhas is saying about 50 lakhs. Thank you, Shuhas. Kian is saying 55 to 65 lakhs. Thank you, Kian. Kian, can you tell me an exact number in between 55 to 65? How much do you think? Let's see. Let's see the number then. Let's see, right. Please let me know. Vaishnav is saying 1 crore. Priyanka, thank you, Vaishnav. Okay, Kian is now have logged his option to 63 lakhs. Let's see, Kian. Priyanka is saying 84 lakhs. Thank you, Priyanka. Kshitij is saying 59 lakhs. Thank you, friends, for your responses. Now let's see that how much Mina's investments have grown to. So the market value of Mina's investment was what? Only 47 lakhs. Just one third of Tina's investments. But what had happened here actually? Same amount they invested, 18 lakhs, 12% rate of return for both of them. They both invested for the age of 55. But what caused a huge difference in between the number 1.5 crore versus 47 lakhs? So the biggest difference that caused here was the time. Time has done the magic here. Tina has started early. So she got the time of 30 years. She's invested for the 30 years of time. Whereas Meena, although she started with a bigger number and invested the same amount, but the time she got was only 15 years. So compounding needs time to do its magic. The more time we have, the more magical will be the compounding effect. Tina started at early age of 25 with this number of 5000. That's why she was able to achieve her goal of becoming a crorepati. While Meena, who started at the age of 40, although with a bigger number, but she wasn't able to enjoy that magical effect of compounding because of the less tenure she had. So, what do we learn from the story? So, we learn here that we should stop procrastinating like Meena and we should start early investing like Tina. Now, I will hand it over to Puneet and he will explain us a Crorepati mantra. Puneet, you're on mute. Yeah. Thanks for letting me know. Friends, I think my audience is very smart. They already know a lot of the data points you're talking about. And it makes my life even easier because I can assure you when I'm talking to my clients, many of them, they do not appreciate this particular part. उनको चाहिए चटाचट पैसा. So अब देखते हैं चटाचट पैसा का फॉर्मूला क्या है, करोड़पति बनना कैसे है. उससे पहले a quick reminder to all of you, we have a Q&A wala icon activated for you at this point of time. Whatever questions you think you would want us to answer, please put it over there. We'll take it in this live webinar. In case your Q&A icon is not working, you can put it down on the chat as well. We'll pick it from the chat. Okay? So let's get into the session, the part which now goes into the Crorepati formula. Okay? हम लोगों ने बचपन में मैथ्स में इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा था. I want you to use the chat वाला icon again and type इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वो 3-4 चीजें क्या होती थी. एक एग्जांपल देता हूं, प्रिंसिपल. बाकी 2 आइटम क्या होते थे? Can you put on the chat what were the 3 driving factors in interest computation? First was principal. बाकी 2 क्या थे? Okay, there you go. Neil has done a hit wicket. मुझे आउट कर दिया. Principal, date and time. Oh, very good. We have got that. Perfect. अब हम देखते हैं
इन द जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, इन तीनों का क्या रोल है, ठीक है। तो द फर्स्ट वन, प्रिंसिपल, मैं भी आपको बताता हूं इसमें 15 का क्या मतलब है। पहला है प्रिंसिपल, सेकेंड इज रिटर्न विच इज आर, एंड थर्ड इज टाइम। ये तीन क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं फॉर यू टू जेनरेट लॉन्ग टर्म वेल्थ। इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज व्हाट आई कॉल एज करोड़पति मंत्र। इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। we'll take an example of that a person is investing 15,000 rupees per month, जो पीछे 15 15 15 था, हमने एक hypothetical example लिया है that a person is investing 15,000 rupees per month. The expected rate of return is roughly 15%. ठीक है, do not hold on to the 15% number, it's just an example, and it is invested for 15 years. So my brilliant audience, could you let me know on the chat again, 15,000 rupees per month, अगर 15 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो तो how much money have you invested? Quick math है, let me see whether you can do that. 15,000 on the chat, 15,000 per month, if invested for 15 years, how much money would you invest? You can take your calculator, no problem. Mobile phone उठाइए या calculator उठाइए, Excel यूज कीजिए या mental math, whatever it is. On the chat, कितना amount invest कर देंगे? How much money should be coming out here? Invested value कितना होना चाहिए? Come on. 20, oh no, Paradi 27 lakhs, Swaz 27, SSGs 27. Yeah. Good answer. 27 lakhs. 15,000 into 12 months is 1.8 lakhs. 1.8 lakhs for 15 years is 27 lakhs. ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या वैल्यू रहेगी इसकी। अगर हमने ये 15,000 15% पर ईयर की 15 इयर्स तक इन्वेस्ट किए, 27 लाख इन्वेस्ट हो गया, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? इस बार मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बिकॉज हम करोड़पति मंत्र बात कर रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग यू वुड हैव गेस्ड उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? लेट मी सी वेदर यू गाइस आर विथ मी, स्टिल अवेक। पुट वाई ऑन द चैट इफ यू अंडरस्टैंड सो फार। पुट जस्ट टाइप वाई ऑन द चैट इफ यू अंडरस्टैंड यहां तक हम कहां गए, क्योंकि अब हम इस फॉर्मूले को स्ट्रेस करेंगे। जिसने अब ये वाला पार्ट सीख गया लाइफ में, दे विल बी एबल टू इंश्योर दैट वो कंसिस्टेंटली वेल्थ जनरेट करते चले जाएंगे और लाइफ के और फाइनेंस पर्सपेक्टिव से अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे। आई एम सीइंग ऑल ऑफ यू सेइंग व्हाई, मेरा काम आधा हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू डू वन मोर थिंग। वी आर गोइंग टू लॉन्च अनदर पोल व्हिच इज हेल्प मी अंडरस्टैंड कि हमने जो ये 3 कॉन्सेप्ट्स रखे ऊपर, व्हिच इज प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, हम एक एक किसको डबल करें जिससे हमें बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 15,000 को 30,000 पर मंथ कर दूं, उससे मेरा बड़ा अमाउंट बनेगा? या मैं अपने रिटर्न्स को 30%, 15% की जगह 30% इन्वेस्टमेंट रिटर्न में डालूं तो मेरा पैसा ज्यादा बनेगा आफ्टर द टाइम पीरियड? या फिर मैं इन दोनों को सेम छोड़ देता हूं और मैं टाइम पीरियड को 15 साल की जगह 30 साल कर देता हूं? पुट योर आंसर्स ऑन द पोल प्लीज, लेट मी सी what do you guys think. Let me see what you guys think. So I'm seeing most of you are typing time. This is good, but on the polls I'm seeing as well there are still some people who are saying return as well. कोई प्रिंसिपल को तवज्जो ही नहीं दे रहा, मतलब पैसा नहीं डालोगे तो पैसा तो बन ही जाएगा। That's what I'm thinking. Anyways, okay, if your poll is not working, I knew that at times technically it could be a problem. You can put it on the chat. So I'm seeing most of the people are typing time. But let's see. I'm happy you guys are saying that. Let's see कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, we'll go on the next one, which is we'll start doubling the principal वाला part first. So we will double it from 15,000 to 30,000 per month. ठीक है, return is going to be 15%. The same assumption we have kept static. Time हमने उतना ही रखा 15 years. Okay, my intelligent people on the chat, use your math again and tell me, अगर किसी इंसान ने 30,000 पर मंथ फॉर 15 years करता गया तो उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर देगा अपनी जेब से? लास्ट टाइम यू गाइज वर स्पॉट ऑन,
You gave me exact answer 27 lakhs. Let's see इस बार कितना डाल पाते हैं आप लोग. Come on, come on. Fast, fast. 54 Suhas. Okay, done. The first answer has come from Suhas. We'll stop there. Thank you. I got my answer. Next time सारे आंसर देखता हूँ कौन पहले आंसर देता है मुझे. ठीक है. So Suhas and all. Yes, you all are right. 54 lakhs जाएंगे. Question. What do you think will be the value of this investment? हमने amount invested double कर दिया, बाकी सब सेम रखा है. इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? पिछले वाले में 1 करोड़ थी, हमने प्रिंसिपल जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको डबल किया. Who's going to type first? Let's see. Pardi saying 2 crores. That's good to hear, Pardi. So Suhas is again, I think Suhas answered earlier than that. Yeah, value should also double. 1.5. Let's see. 2 crores. Simple math, I think so. Suhas has actually answered the concept very nicely. That जब amount ही double कर दिया, बाकी सब same रखे, तो amount value भी double हो जाएगी. Good one. Let's see the next one. Now we will double the return. Principal 15,000. Return 30%. मैं पहले ही बहुत बड़ा disclaimer देता हूं. भाई लोगों, बहन लोगों, जो भी लोगों, 30% बहुत डिफिकल्ट है. बहुत कम लोग हैं जो होंगे जो कंसिस्टेंटली इतने लंबे ड्यूरेशन तक 30% रिटर्न लाते हैं. ये केवल एक एजुकेशनल एक्सरसाइज है. 30% इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. बट व्हाट वी वांट टू सी दैट इफ वी आर चेजिंग हायर रिटर्न्स एंड इफ वी आर सक्सेसफुल टू गेट इट फॉर दिस लॉन्ग ड्यूरेशन, इन्वेस्टेड वैल्यू तो उतनी रहने वाली है. मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा. 27 lakhs ही रहने वाली है, बिकॉज 15,000 12 months into 15 years is 27 lakhs. Tell me, my friends, what do you think will be the value of this investment? Let me help you remember. जब सब 15 थे तो 1 करोड़ वैल्यू थी. जब हमने प्रिंसिपल को डबल किया तो वैल्यू डबल हो गई. यहां पे हमने रिटर्न्स को डबल कर दिया, 30% कर दिया. बहुत बड़ा अमाउंट है. So, okay, SS is saying 2.03 crores. Oh my God, I don't know how you guys are so accurate. 2.03. ठीक है. Then SSG 5 crores, Jay 2.5, Pardi 3.5. Okay. ठीक है. Let's see the answer. The answer is 3.5 crores. 3.5 crores. So, by doubling the return, the initial output became 3.5 times. By doubling the principal, it became double. Now let's see the third dimension, which is time. कोई चीज सेम रखते हैं. Invested amount 15,000, return 15,000. अब हम बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, नॉर्मल स्टैंडर्ड पे चले गए, बट हमने अपने टाइम ड्यूरेशन को डबल कर दिया, 30 years कर दिया. ठीक है. हाँ, अब 30 years तक इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टेड अमाउंट तो 54 lakhs हो गया ना. पहले तो 15,000 के लिए कर रहे, 15,000 डाले थे ना 15 साल के लिए, 27 लाख था. अब 54 lakhs इन्वेस्ट हो गया. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हाउ मच वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस चेंज? 27 lakhs किया तो 1 करोड़ हो गया इन्वेस्टेड. 54 किया तो शायद 2 करोड़ हो जाए. कितना लगता है? कियान इज सेइंग द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू विल गेट. आई मीन कियान अमाउंट, हाँ 54 लाख कर दिया ना, 27 लाख ही गए, तो आई एम अज्यूमिंग 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ वैल्यू जानी चाहिए. Pardi Singh 7. Looks like people are at times having very high return expectation. Jay is saying 4 crore. Vaishnav is saying 7 crores. Come on, now I want most of you to please think about it. I'll give you again a summary. सब सेम था, 1 करोड़ था. प्रिंसिपल डबल किया तो 2 करोड़ हुआ. रिटर्न डबल किया 30% किया तो 3.5 करोड़ हुआ. यहाँ पर हमने सेम सब चीज रखा, टाइम बढ़ा दिया. So 6 crore. Liam, Neil is saying 5 crore. Okay, there's so many, we've got so many other participants. It would be lovely to see, because this is the most critical part. It would be lovely to see what you guys are thinking in your mind. Okay, I'll ask a simpler question. Do you think that the value would be higher than 5 crore? Type Y. If you think that the value would be less than 5 crores, type no, N. Why or no? That might be a simple answer. So yes, Liam, SSG, Praneeth. Okay, this is a better way to answer, right?
I think I should ask the questions this way. Simpler, more wise. Okay. Thank you. You can stop now. Let's see the answer. It will be 8.5 crore. My God. It was not even 5. I think so no one who was chatting could even put that point. Maximum people stopped at 7. 8.5 करोड़. ये है जबरदस्त चीज कंपाउंडिंग की फ्रेंड्स. ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, मेरा जो करोड़पति मंत्र की हम बात कर रहे हैं उसमें हमने क्या वेरिएशन रखे. पहले हमने प्रिंसिपल को डबल किया तो हमारा आउटकम था 2 करोड़. हमने रिटर्न्स को डबल किया, आउटकम था 3.5 करोड़. और हमने टाइम पीरियड को डबल किया तो आउटकम हो गया 8.5 करोड़. I can tell you from my experience of dealing with over 400 families over last 15 years that the most focus goes here. Most of the focus is बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टमेंट रिटर्न होना चाहिए, 20%, 30%, मजा आ जाए रिटर्न वाला होना चाहिए. किसी को ये नहीं, किसी से नहीं झिलता पेशेंटली कि टाइम दो इन्वेस्टमेंट को. अब एक चीज समझिए, रिटर्न बढ़ाने का मतलब है रिस्क बढ़ाना पोर्टफोलियो में. आप एक हाईवे में, मोटरवे पे सोचिए, आप हाईवे पे जा रहे हैं. हायर रिटर्न का मतलब क्या है? बार बार गाड़ी को एक्सीलेटर पूरा दबा दीजिए कि वो 100, 120, 130, 140, 150 तक चली जाए. क्यों? जल्दी से जल्दी कवर करना है उसमें. लेकिन रिस्क भी तो बढ़ जाती है लाइफ की. ऑन द अदर हैंड, टाइम जैसे ही दिया हमने किसी चीज को, हम आराम से अपने 70-80 की स्पीड पे क्रूज करते हुए जा रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत है. आउटकम, वी कैन ड्राइव लॉन्गर, गाड़ी का एवरेज भी बढ़ जाता है, राइट? सो इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग, व्हाट इज मोर क्रिटिकल इज बीइंग पेशेंट. पहला, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म, लंबा. ठीक है, एक चीज याद दिला रहा हूं मैं आप लोगों को, Q&A सेक्शन में या चैट पे अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए सो दैट वी कैन टेक देम आफ्टर दिस. ठीक है, इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म. आपने देखा 15 साल से 30 इयर्स करते कैसे ही आपके रिटर्न्स एकदम 8.5x हो गए. तो जो भी चीज लॉन्ग टर्म है उसमें आपको पेशेंस तो चाहिए होगा. देयर विल बी सो मेनी इयर्स जहां आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा होगा या नेगेटिव जा रहा होगा. जिसने पेशेंस छोड़ी वो सीधे उसका कंपाउंडिंग नीचे चला गया. अब जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, हमने इसमें कौन से एग्जाम्पल लिए थे? 30 इयर्स की बात की थी. 30 इयर्स तक किसके पास 30 इयर्स होंगे? जो इंसान 70 इयर्स का है उसके पास 30 इयर्स ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, जो 20 इयर्स का है उसके पास है. और एक और चीज मन ही मन सोचिए. आई एम गिविंग ईच वन ऑफ यू अ क्विक क्वेश्चन. टाइप इट ऑन द चैट अगेन. Whatever your age is, do you think you can invest for 30 years if you start today? If you're 20 years plus 30 is 50. Do you think you can give your money that much time? Think about it. You have to start early because इसमें सबसे बड़ा important चीज क्या है? The important thing is that we do not have many years of compounding it at our hands. अकबर बीरबल की कहानी, सो हमने अभी क्या देखा, सोचा था उन कहानियों में. पहली क्वेश्चन जो हमारी पहली कहानी थी, अकबर बीरबल की कहानी थी, उसमें 64 स्क्वायर्स पे डबल हो रहा था. डबल होने का मतलब क्या है? 15% रिटर्न. अपने पास 64 डबलिंग के टाइम है अपने पास. लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर आप, जो हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, अगर एक इंसान 0 एज पे जिस दिन पैदा होता है उस दिन इन्वेस्ट करता है, तो अगर ये सोचा जाए कि 100 साल तक जिएगा, तो 5 साल के मल्टीपल्स में अगर डबल हो रहा है उसका पैसा, तो 100 डिवाइड बाय 20 उसके पास 100 डिवाइड बाय 5 इयर्स, क्योंकि हर 5 साल में पैसा डबल हो सकता है, तो उसके पास केवल 20 अपॉर्चुनिटीज हैं. केवल 20. एग्जाम्पल, 0 से 5 डबल, 5 से 10 उसका डबल, 20, 10 से 15 उसका डबल. ऐसे केवल 100 साल तक अगर इंसान जी जाए तो उसके पास केवल 20 ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं. 64 स्क्वायर वो अकबर बीरबल वाले कंप्लीट नहीं कर पाएगा. और यही सोचिए कि आप ये चीज करते करते आप 20 साल तक रुक जाते हैं, तो आपने 4 अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी 0 to 20 इयर्स की.
और यही अगर आप सोचते सोचते 30th ईयर तक पहुंच जाते हैं कि हाँ मैं वो टीना मीना का एग्जाम्पल आ गया कि मैं तो बाद में करूंगी, और तो आपने उठा के अनदर 2 और 30 तक आपने 6 और अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी। तो इसमें सिर्फ एक चीज काम आती है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में, डू नॉट ट्राई टू चेज द रिटर्न, ट्राई टू स्टार्ट अर्ली। वी हैव ओवर हियर आवर सोशल मीडिया हैंडल्स where we weekly release useful personal finance content. The most active ones are all in front of you. We are active on Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, and Twitter. Across all of them, we have one single handle, which is @Baney FA. You can go and check out and even subscribe or follow us over there. Our email IDs are here in case you are interested. Do plot your questions on the Q&A section, and then we can take them one by one. Right. I'll let the Q&A question and answers queue build up. We also have received a few questions beforehand. So, Anubi. Correct. Yeah. So the first question that we have received here is, what is the right amount to invest? Oh dear. This is, Anubi, don't we receive this question almost in all That's good. conversations which we have with people? What's the right amount? And unfortunately, दोस्तों, कोई right amount नहीं है कि कितना अमाउंट राइट होना चाहिए। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों राइट अमाउंट का कोई आंसर नहीं है। अब हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, 2 सेम एज के लोग लेट्स से एक सिटी में काम कर रहे हैं, दोनों अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बट दोनों की सर्कमस्टांसेस कितनी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान अपने पापा मम्मी के साथ उनके घर में रह रहा है, उसको रेंट भी नहीं पे, इनफैक्ट उसे कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं, सब चीज आर टेकिंग केयर ऑफ बाय समवन। तो उसकी जो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आ रहा है, ही कैन एक्चुअली यूज इट फॉर एवरीथिंग व्हाट दे वांट। तो फॉर हिम, if he's investing anything less than 75,000, I will be disappointed honestly. क्यों? उसके पास कोई खर्चे ही नहीं है। On the other hand, we take a second example where the same person, another friend, let's say उसको रेंट पे रहना पड़ रहा है, उसको घर पे खर्चे के लिए पैसे भी भेजने पड़ रहे हैं, उसके 1 लाख में से 80,000 रुपए तो ऐसे ही निकल गए, उसके पास अब 20,000 रुपए बचे, तो वो अगर 20 में से 10 भी इन्वेस्ट कर देता है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। So every person is different, but to identify what is your right amount, आपके लिए आपके पर्सनल फाइनेंस में राइट अमाउंट क्या है, उसका राइट तरीका क्या है, आप अपना एक बजट बनाइए कि मेरे इनकम कितने हैं, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचता है, अगर आप पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी ऑलरेडी बैंक में है फॉर योर इमरजेंसीज और आपको कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट हो सकता है, राइट? Correct. So depends person to person. Person to person, yeah. Right. So Puneet, Kian is asking, apart from stocks, should we be considering to learn how to do trading? Oh, 100%. Why not to learn anything? So many people discourage, मत करो ये, मत करो मत करो। मेरा तो व्यू रहता है सब चीज करनी चाहिए लाइफ में, कोई चीज ऐसी नहीं रहनी चाहिए कियान जो आपके मन में मलाल रह जाए, हाय काश मैं ये करता, पुनीत के बातों में पड़ गया, नहीं किया इसलिए मैं यहाँ से करोड़पति नहीं बन पाया। तो कियान 100% करो, लेकिन अब मैं इसके पीछे एक बड़ा सा लेकिन डालता हूँ। ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस। सेबी क्या बोलता है? पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस समझते हैं। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म विजन, ये बिजनेस में जिसमें मैंने पैसा डाला ये कितना लंबा जाएगा। ट्रेडिंग को कुछ मतलब नहीं है लॉन्ग टर्म में, उसको क्या मतलब है, मैंने आज 100 रुपए डाले, आज शाम तक मैं उसको एटलीस्ट 110 पे निकल जाना चाहिए बेच के। सो इन केस ऑफ ट्रेडिंग, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैथमेटिकली कुड बी 50%, बट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द शार्क्स हु आर हैविंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज। उनका ऑब्जेक्टिव ही यही है छोटे इन्वेस्टर्स को, गलेबल इन्वेस्टर्स को पकड़ के निचोड़ दिया जाए। सब ट्रेडर्स को लगता है कि मैं उस सक्सेसफुल कैंडिडेट में आता हूं। यू नो, सेबी ने खुद ने एक एनालिसिस की, जो इंडियन इन्वेस्टमेंट का रेगुलेटर है, 90% ऑफ द ट्रेडर्स डोंट मेक मनी, दे मेक लॉसेस। लेकिन अगर आपको लगता है कियान कि आप में है वो दम कि आप उन 10% में से हैं और आप ही करोड़पति बन सकते हैं ट्रेडिंग में, बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट जो हम बच्चों से भी बोलते हैं ना अनुदी कई बार कि ये मोमबत्ती है, ये फ्लेम में मत टच करना, हाथ जल जाए, लेकिन वो बच्चे को अट्रैक्ट करता रहता है। तो आई वुड सजेस्ट एक बार छू के तो देखो, समझो तो सही क्या है। जल जाओगे कोई बात नहीं, छोटे अमाउंट से आज जल जाओ, बेटर है रादर देन व्हेन यू आर एट योर 40s एंड 1 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग करने लग जाओ। सो कियान, मन में कुछ मलाल मत रखना, हर चीज ट्राई करनी चाहिए छोटे अमाउंट से, और लेकिन उससे लेसन सीख कर
कि ये आपके लिए है नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि फिर उससे लेसन्स ना सीखो कि कुछ गलती हुई तो, ठीक है। सो ट्रेडिंग आई ट्राई थिंक कीजिए। पुनीत आपने भी ऐसे ही सीखा है। मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही सीखा है और सीखकर उस पॉइंट तक पहुंच गया कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट पे एफएनडो एंड ट्रेडिंग्स आर, एफएनडो इज कंप्लीटली बैंड, डिसेबल्ड है। एंड मेरे को याद नहीं मैंने लास्ट कब किसी स्टॉक को बेचा था। सो आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। So the next question is from Krushan and Avni. दोनों का similar question है. Where to invest in the coming few years to get a higher market value? Where to invest? Actually, Krushan and Avni, this question actually comes up so many times, and मैं आपके लिए बहुत सिंपल कर देता हूँ। लाइफ में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं, केवल 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ओनली 4। पहला, रियल एस्टेट, जो हम कहते हैं लैंड प्लॉट, एग्रीकल्चरल लैंड, फ्लैट, इस सब एक कैटेगरी में जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए करके, ठीक है। सेकेंड इज द इंटायर कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड रिटर्न्स, एफडीज, बॉन्ड्स, पीपीएफ, एम्प्लॉयड लोगों के लिए, सैलरी लोगों के लिए पीएफ, ये वाला कम। इसमें क्या है, जितना रिटर्न बोला है उतना देंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। थर्ड इज प्रेशियस मेटल्स, प्राइमरी गोल्ड को बोलूंगा मैं, जहां पर आप लॉन्ग ड्यूरेशन से हमने देखा है गोल्ड हैज गिवन अस गुड इन्फ्लेशन प्रोटेक्टिंग रिटर्न, बट गोल्ड से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारे को 20-25-50% रिटर्न हो जाएगा। गोल्ड है इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न। एंड द लास्ट कैटेगरी इज बिजनेसेस। सॉरी, आप लोग सोचोगे पुनीत क्या बोल गया, इसमें तो मेरा म्यूचुअल फंड, मेरा पीएमएस, मेरा इक्विटी शेयर, स्टॉक मार्केट तो कहीं आया नहीं, तो यहीं पे रुक गया। बिजनेसेस गाइस, आप जब किसी, अब मैं ये लास्ट वाला पार्ट को मैं बताता हूँ। अगर आपने किसी ने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी अपने क्लास में, इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयज लैंड, लेबर, कैपिटल टू क्रिएट समथिंग, सम वैल्यू। दैट इज व्हाट द फोर्थ कैटेगरी इज। अब उस कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, आप खुद अपना काम चालू कर लो, जैसे मेरा सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेरा खुद का काम, दैट्स माय बिजनेस। सेकंड, you work together as a partner with someone. Third, you could work with someone, let's say आपके पास टाइम नहीं है, आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो आप क्या करो कि किसी ना स्टार्टअप में पैसा डाल दिया, या आपने स्टॉक मार्केट्स के रूट से किसी कंपनी में थोड़े से शेयर्स उठा लिए, छोटी कंपनी के से लेकर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर खरीद लिया। सो दिस इज द फोर्थ कैटेगरी विच इज द स्टॉक्स। नाउ वेयर डू वी डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट और व्हाट ऑप्शंस टू इन्वेस्ट? हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की एक प्रॉस एंड कॉन्स है, अच्छाइयां और बुराइयां, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए है। इसका एक सिंपल सा मैं ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल बहुत बार देता हूं कॉमनली, कि अगर आपको लेट्स से अपनी, आई थिंक सो इफ आई रिमेंबर यू वर इन फ्रॉम पुणे, अगर आपको पुणे से दिल्ली जाना है तो क्या आप पैदल चल के जाओगे या फ्लाइट लोगे? मोस्ट पीपल से विल से शायद मैं फ्लाइट ले लूंगा, ट्रेन अगर फास्ट ट्रेन मिल गई तो ले लूंगा, लेकिन पैदल चल के जाना तो बेवकूफी है। मतलब मुझे क्या 1 महीने तक पहुंचना है क्या? ऑन द अदर एंड मैं बोलूं कि आप अपने घर से अपने कॉलेज तक या अपने ऑफिस तक फ्लाइट से जाओगे, तो आप कहोगे क्या बोल रहे हो? आई रादर टेक अ स्कूटर, पुणे इज अ लैंड ऑफ स्कूटर्स, और अ कार एट मैक्स, व्हाई विल आई टेक अ फ्लाइट? सो सेम विद इन्वेस्टमेंट्स, आपको जिस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। वो आपको क्या बताएगा कि कितना लॉन्ग ड्यूरेशन है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जाम्पल, आई एम इन्वेस्टिंग फॉर माई, लेट्स से बाइंग अ हाउस आफ्टर 10 years, 10 साल है, तो अगर 10 साल है, देन यू चूज अ रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट जो उस 10 साल के पीरियड के लिए राइट इन्वेस्टमेंट है। ऑन द अदर एंड यू माइट से मुझको एक स्कूटर खरीदना है अनदर 2 महीने में, तो देन यू विल चूज द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज गुड फॉर 2 months। यू कैन नॉट डू वन थिंग कि लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्विटीज इज अ राइट इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको 2 महीने के रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर लो। सो इसका कोई राइट आंसर नहीं होता। यू आइडेंटिफाई योर गोल्स, उससे आपको आइडेंटिफाई होता है किस टाइम पीरियड के आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड फिर उसमें से आप राइट इन्वेस्टमेंट चूज करके इन्वेस्ट करते हो। It may sound at times confusing for some people. In that case, you should work with a finance professional who could help you understand and decode this financial jargon, right? The next question is from Neil. He's asking, is investing in Forex better than stocks? Investing in Forex. Forex, okay. The question which I would ask reverse is, what is Forex? Forex actually, the full form is foreign currency, okay? Foreign exchange. That's what the right thing. And in the world of investing, foreign currency, do you know, dosto, it falls under the category of fixed income. It does not fall in the category of equities. It falls in the category of fixed income. Investment banks इसको categorize करते हैं fixed income में.
फॉरेक्स कोई इन्वेस्टमेंट है क्या दोस्तों? इट इज लाइक होल्डिंग कैश. नाउ यू माइट से मैंने डॉलर अगर खरीद के रख लिया और डॉलर मैंने खरीदा 83 रुपीज पे और वो बढ़ के 86 हो गया, तो मैंने तो पैसा बना लिया. हाँ, बन गया पैसा, बट आपने डॉलर पकड़ा है ना. अब उससे कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे? अब अगेन यहाँ पर एक और चीज चालू हो जाती है कि मैं पहले 80 पे खरीद के 84 पे बेचूंगा, फिर 83 पे खरीदूंगा, फिर 80. देन यू आर गेटिंग इनटू टेरिटरी ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग. I already told you, trading and investing are two separate things. Investing in foreign currency, in my view, is not one of the greatest idea. I don't know how you'll generate wealth. I'll give you a perspective. The long term INR dollar, Indian rupee dollar, का जो maximum growth dollar terms में मिला या INR depreciation के चक्कर में पैसा टूटा, was no more than 4%, rather 3%. तो फॉरेन करेंसी में आप ये नहीं कर सकते कि आज मैंने 1 लाख रुपए के डॉलर खरीद के रख लिए और मैं उसे 10 साल तक पकड़े रहूंगा. आप मैक्सिमम 4%, उससे बेटर आप सेविंग में पैसा छोड़ दो, यू विल अर्न मोर. बट अगर आप कह रहे हो मैं खरीद बेच करने वाला हूं, तो आप इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हो, आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हो. सो थिंक अगेन. Yes, thank you, Puneet. The next question is from AJ. The question is, should we look at virtual digital assets for portfolio diversification in addition to the 4 asset classes that you just mentioned? AJ, I think you're talking about the world of cryptos. Right? Correct. It is a very polished way of talking about cryptos. Yes, cryptos could be in the future the fifth avenue. But we are watching it very carefully and very keenly. I'm not against any of this one. But challenge क्या है? In many of these cases, what we need to understand, हमें क्या समझना है कि क्रिप्टो का अंडरलाइंग इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एंड क्या उस इंट्रिंसिक चीज की कोई वैल्यू है जो ग्रो कर रही है. एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको. स्टॉक्स के केस में बिजनेस है जो पैसा कमा रहे, अर्निंग्स कमा रहे हर साल, सालों साल. उस चक्कर में स्टॉक प्राइस बढ़ती है. एफडीज, बॉन्ड्स, लोन है, वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट आ रहा है. रियल एस्टेट वो कहते हैं इट्स ओनली रियल एसेट इन द वर्ल्ड. उसमें शायद रेंटल आ जाए, कैपिटल एप्रिसिएशन आ जाए, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती. यू कैन पुट इट दिस वे. द नेक्स्ट वन इज प्रेशियस मेटल. मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया बिकॉज गोल्ड की क्वांटिटी बड़ी कम है. हमने कल ही एक वीडियो लॉन्च किया ऑन गोल्ड ओवर द अक्षय तृतीया, एंड दैट हैज गॉट वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ व्हाई गोल्ड कैन स्टोर सम वैल्यू. बिकॉज उसमें कोई क्वांटिटी ही ज्यादा नहीं ऐड हो पाती. हर साल थोड़ा सा डिमांड बढ़ता है, उसकी प्राइस ऊपर चल जाती है. अब क्रिप्टो के केस में क्या है, और एक और चीज समझने की जरूरत है. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टोज, एनीथिंग विच हैज गॉट अ परसीव्ड वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट. बट यहाँ पे बहुत बड़ा टर्म है परसीव्ड वैल्यू का. परसीव्ड वैल्यू क्या है? ट्रस्ट है. अगर आज पूरी दुनिया ट्रस्ट कर ले उस वर्चुअल डिजिटल एसेट पे, इट विल बिकम एन इन्वेस्टमेंट. कोई उस माइकल लाल उसको नहीं छोड़ सकता कि एसेट बने. लेकिन एक झटका लगेगा किसी का उस पर फेथ टूटने में, उसकी वैल्यू क्रश कर जाएगी. तो मेरे लिए क्या चैलेंज रहता है ये समझने के लिए कि क्या इन वर्चुअल डिजिटल, और इतनी सारी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, किसको मैं समझूं वो ये वर्चुअल. फॉर एग्जांपल एक को आप बोल सकते हो कि बिटकॉइन और इथेरियम माइट बी द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट काइंड ऑफ ट्रस्टवर्दी, बट दे आर सॉफ्टवेयर एसेट्स. किसी दिन किसी रेगुलेटर ने कहा आज से हम नहीं मानते इनको, तो हम फंस सकते हैं. हो सकता है ये नहीं हो सकता है ये हो. बट जब तक आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, मैं उसको एक कोर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं रखता, बिकॉज इट कैन बर्न अस बैड. बट इट कुड बी कंसिडर्ड समथिंग विच सम पीपल मे एक्सप्लोर, मेनी पीपल डू. यू मे ऑल्सो वांट टू ट्राई. अगेन, किसी चीज को छोड़ना मत लाइफ में, हर चीज को चख के देखना चाहिए, समझने के लिए कि क्या ये आपके लिए बनी है नहीं बनी. Shri is asking a similar question. What is the most appropriate type of investment that we should go for? इट इज द सेम क्वेश्चन. अब इसका क्या है ना, इसका मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट को ऐड कर देता हूँ. मोस्ट अप्रोप्रिएट का कोई राइट आंसर नहीं है. द राइट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि अगेन आपको इन्वेस्टमेंट चूज करना है अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से. लेट्स से हम कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लेट्स से उस कैटेगरी में कौन से इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे? इक्विटीज आ जाएंगे, गोल्ड आ जाएगा, रियल एस्टेट भी आ सकता है, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए डेट आ सकता है. लेकिन choosing the most raw investment might be a challenge because then you have to research a lot. So either if you have that capability, definitely उसको raw asset को मतलब equities के share सीधे खरीद लिए. But most of the people are learning, या उनकी core job investing नहीं है, they must be doing something else. Then in that case they could use those instruments such as mutual funds.
Brilliant asset. मेरा काफी investment, मेरा personal investment goes into mutual funds. Why? You have a professional fund manager जिसका full time job ही यही है. उसके पास एक army of research analysts है जिसका काम ये research करके they take out the bad options out and अच्छी companies, अच्छी investment options को करके अलग-अलग उन्होंने wrappers बना रखे हैं. अपनी requirement के हिसाब से I can invest from there. So you should consult, let's say again, your finance advisor or personal finance professionals to understand कि आपके लिए क्या right category है and make a start. Again, it's a long-term investment. Make a start. Correct. Puneet, we'll take the last question. The question is from Kian. He's asking concept of beta in stock investing and which one should we go for? Value investing versus growth investing. I think Kian, I'm amazed to see this question because such questions aren't even asked by most, what I would say, professional investors as well. So kudos to you, buddy. I'll try to help you understand based on how much limited I understand. Beta in investing in simple terms means risk. Okay. What it means over here is जिसका बीटा 1 है उसकी रिस्क उतनी ही है जितना मार्केट की रिस्क है इन टर्म्स ऑफ मार्केट. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सेंसेक्स जितना ऊपर नीचे जाता है उतना ही अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे जा रहा है तो आपका बीटा 1 है. अगर आपका इन्वेस्टमेंट और ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा है सेंसेक्स से तो आपका बीटा 1 से ज्यादा है और नीचे है तो लेसर है. मैं बहुत सिंपल टर्म से बता रहा हूं. तो आइडियली इन्वेस्ट एक अच्छा दिग्गज इन्वेस्टर कौन है? जो अगर रिस्क ज्यादा ले रहा है, बीटा ज्यादा बढ़ा रहा है तो उसका रिटर्न भी डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा लेकर आ रहा है, या रिटर्न मार्केट जितने लेकर आ रहा है बट रिस्क मार्केट से कम कर दी उसने, कम रिस्क पे उतना ही रिटर्न आ गया, या कम रिस्क पे और भी ज्यादा रिटर्न आ गया. सो बीटा हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना रिस्क कितना है. आई स्टॉप द स्पीच नाउ. इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क कितना है. ऑन द अदर हैंड, hence it impacts your portfolio. अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा ज्यादा है या पोर्टफोलियो is more risky, risk is never a good idea in any investment portfolio. You need to de-risk it, get its beta down. Value and growth, it's very prevalent. This term has become very prevalent of late, and in many books are there which are published about it. Value investing की कोशिश ये रहती है कि किसी इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट को खरीदा जाए जिसके अंदर हमारे को, टेक्निकल वर्ड यूज करता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. इन अदर वर्ड्स व्हाट इट सेज इज कि 100 रुपए का किसी में वैल्यू है ना, तो हमें 80 में मिल जाए ना तो मजा आ जाए. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. I'll give you an example of value investing from buying a cloth perspective. Let's say you really like a particular brand of shirt, ठीक है, एंड आप मॉल में जा रहे हो और उसकी प्राइस टैग 2000 रुपए है. आपको अच्छी तो लगती है वो शर्ट क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन 2000 क्यों? दूसरी शर्ट की कितनी, 1500, 1200, 1000 की रेंज में. नाउ ऑल ऑफ अ सडन सेल आती है और उसकी वैल्यू डिस्काउंट होके 2000 से गिरकर 1200 पे मिल गई या 1000 पे मिल गई या बाय वन गेट वन. इमीडिएटली दैट थिंग बिकेम अ वैल्यू फॉर यू. आप अब 2000 में 2 खरीद सकते हो रादर देन 1. दैट्स वैल्यू इन सिंपल टर्म्स. ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ उस 2000 वाली शर्ट के पीछे भी दिमाग लगा सकता है. वो क्या कहता है, ये तो बॉस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की शर्ट है, इसको किसी भी दाम में खरीद लो, ये कभी खराब नहीं होती, 10 साल चलती है, आई एम ओके विथ इट. और मैं इस शर्ट बनाने वाली कंपनी हूँ, लोग इस शर्ट को किसी भी प्राइस पे खरीदते रहेंगे, इस कंपनी का फ्यूचर सेट है बॉस. तो उसमें इट्स वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल. कहा जाता है कि इसकी ग्रोथ काफी प्रिडिक्टेबल है, इसमें क्वालिटी ज्यादा है, इसके सारे रिटर्न रेशियो अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत ही सुपर बढ़िया है, तो वो ग्रोथ सेंट्रिक. क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसका कोई राइट आंसर नहीं. दे कीप ऑन चेंजिंग एज मार्केट प्रेफरेंसेस चेंजेस. ग्रोथ बिकम्स वैल्यू, वैल्यू बिकम्स ग्रोथ. सो दीज थिंग्स कंफ्यूज इन्वेस्टर्स क्वाइट अ लॉट. इवन प्रोफेशनल एडवाइजर्स को भी वो कंफ्यूज करती है. But it's good to see that you are bringing up those questions. I think, Anubi, we have taken I'm quite happy to see so many questions coming in. Right. We have sent our email IDs as well on the screen share. Do follow us on our social media handles at Baney and FA. That you will be able to kind of get more regular such content. Anubi, anything from your end? Yes, and sorry guys for whose questions you're not able to take up now. Thoda sa lack of time hai. I think if you have any further questions, you can mail it to us. We will be happy to answer. Yes. What we would do is we will upload the recording of this session on our YouTube channel. Just in case you missed some part of it, in case you had to leave or you joined a little bit late, you can hear this again, and you can also share with your friends and family members. On that note, thanks for taking a time out on this Sunday evening. Have a good day. Bye-bye. Thank you so much, everyone.